स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज वर्ड एसोसिएशंस। ठीक है, whenever you are processing some document, so the words are associated with each other from one document to another. हम एक डॉक्यूमेंट की बेस पे वर्ड्स के बीच में एसोसिएशंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, but if there is a pattern across a sequence of documents, so that means कि इसके अंदर कोई meaningful information है। ठीक है, just like some of the other approaches we used, we need to have data in order to apply some statistical approaches. Same is the case with finding word associations, particularly contextual associations among words. So what we are interested in is basically to find out which words are more related to one another. And if we see that pattern appearing across most of the documents, then it means कि उन words के बीच में कोई खास association है. So basically words के बीच में जो association है, it can be of different types. For example, words may be synonyms and antonyms. ठीक है? For this we need to have a dictionary. किसी भी लैंग्वेज की अगर आपके पास डिक्शनरी है, so you can find the synonyms and antonyms of any given word. So these are the semantic relationships between words के मीनिंग के लिहाज से वो किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, which means synonyms, और एक दूसरे के opposite हैं, which means antonyms. So हम खुद से इस चीज का पता नहीं लगा सकते. We need to have access to some resource of that language, particularly a dictionary, जिससे हम ये information identify कर सकें. Then the words may also be associated with one another based on their spellings. We call them homonyms. ठीक है, ये कौन से words हैं? These are the words. Again, for this we need to have we need a dictionary in order to find out कि इसका if that is being the case. हमें थोड़ा सा contextually उसका idea हो जाता है, but still we need to have a dictionary. Homonyms are the words that have exactly the same spellings, but their meaning is different. ठीक है, so when used in different contexts, we can identify कि यहाँ पे वो किस sense में use हो रहा है. So there are many words that you may think of जिनकी exact spelling एक जैसी है, but they mean different in different scenarios. ठीक है? We have homophones. यहाँ पे भी आपको डिक्शनरी चाहिए होगी, because the dictionary also helps you towards pronunciations. So ये वो words हैं जिनके spellings different हैं, but the sound they make is the same. ठीक है? So their pronunciation is almost the same. They make the same sound although the spellings may be different. So ये हमारे पास different कुछ words के बीच में relationships हैं, and they are all based on dictionaries. We need to learn about them from dictionaries, and we need to remember those associations between words. But there is another kind of association that we can just identify from within the documents, that is based on some statistical approaches. So इसके लिए तो हमें dictionary की ही जरूरत पड़ेगी, and once if we have such dictionary in digital form, we may pass one word to it, call a function, and it may return synonyms, antonym, homonyms, or anything that we want as a response to that query. These context-based associations of words are context-based associations. These are the associations that are based on how the words co-occur with each other, how the words occur in a particular context. ठीक है, और इसके लिए हमें अगर डिक्शनरी की एक्सेस ना भी हो, just by applying some statistical methods we can identify कि इन words के बीच में either statistic contextual relationship exist करता है कि नहीं. Contextual relationship again can be of two types. One is called paradigmatic, and the other one is called
syntagmatic. So the words may be contextually related to one another with these two associations, that is paradigmatic or syntagmatic. So now if we particularly talk about what these approaches are, so in case of paradigmatics, let's just start with this one. A paradigmatic association between two words is basically when the words have similar context or a number of documents. So let's say I have a word A, and that word is frequently occurring with the words B, C, and D, right? This word A is frequently occurring with these words across different documents. हमारे पास यहाँ पे और भी words हैं जो change हो रहे हैं, but A has a very strong relationship with B, C, and D. So it shows that there is some kind of relationship between these words. They are contextually related. So if that is the case, if A and B or A and B, C, and D are frequently occurring together, so there is an association between these two. In other words, they are related in contextual use of each other and they therefore have a meaning in a given context. So this kind of association is called syntagmatic association. For example, if we have a word phone and if we have a word call, तो आपको जिन डॉक्यूमेंट्स में फोन का वर्ड मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉल का भी वर्ड मिलेगा सो ये synonyms नहीं है दे आर नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वन अनदर बट दे आर सो हाईली कॉन्टेक्चुअली कोरिलेटेड के फोन के साथ आपको मोस्टली कॉल का वर्ड मिलेगा एंड कॉल के साथ आपको फोन का वर्ड मिलेगा सो दे आर वेरी मच रिलेटेड टू वन अनदर इस तरह से सो दे में भी इनकी एग्जैक्ट रिलेशनशिप टाइप क्या है व्हाई दे आर सो मच ऑकरिंग टुगेदर ये बॉडी टू पार्ट की रिलेशनशिप भी हो सकती है और इनके बीच में कोई एक्शन बेस्ड जो है रिलेशनशिप भी हो सकता है लेट्स से वी हैव लैपटॉप and charger. So again, in a given context, if you have a number of documents on laptop, more often you would see the word charger appearing often. So that means that we have these kind of relationships between words. We call them contextual relationships. ये जो particular type of contextual relationship है जो यहाँ पे मैं आपको example दे रहा हूँ, they are called syntagmatic relationship. ठीक है? In which two words are frequently occurring together within a fixed window that we call context. ठीक है, उस पर बात करते हैं कि context हम किसको कहते हैं. Basically, अगर हम बात करें तो sometimes if we have shorter documents, let's say this is D1, this is D2, this is D3. So in that case, अगर ये डॉक्यूमेंट्स की लेंथ कम है तो हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं इन दैट केस यहाँ पे जितने वर्ड्स ऑकर हो रहे हैं वी से दैट दे ऑल दीज वर्ड्स आर ऑकरिंग विद वन अनदर और फिर हम अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि कौन से वर्ड्स के साथ कौन से वर्ड्स फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहे हैं सो बेसिकली टू आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू हैव अ विंडो कि इस विंडो के अंदर जो वर्ड्स ऑकर हो रहे हैं वी वुड कंसीडर देम एज वर्ड्स अकरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन अनदर सो इन केस ऑफ शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक विंडो कह सकते हैं या हम एक सेंटेंस को एक विंडो कह सकते हैं कि वो सारे वर्ड जो एक सेंटेंस के अंदर ऑकर करें दे आर बेसिकली द वन दैट आर अकरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन अनदर जो दूसरे सेंटेंस के अंदर है हम उसको एक कॉन्टेक्स्ट कंसीडर नहीं करेंगे और वी मे सिंपली जस्ट define the window as based on some number of words, let's say 10 words. So अगर ये word है so इसके around जो 10 words हैं 5 on this side and 5 on this side is the context of this word. फिर इस word के लिए ये window थोड़ी सी आगे move हो जाएगी and then again 5 on one side and 5 on the other side is going to be the context of this word. अगर हमारा कोई word इस side पे है so in that case the 9 words on this side is going to be the context of this word. So हम इस तरह से कोई fixed number of words based context window भी define कर सकते हैं or in case of shorter documents we can just say the whole document is one context और हम जैसे मैंने आपको कहा sentences और paragraph को भी context window के तौर पे यूज कर सकते हैं ठीक है अभी लेट से अगर हम वो इस पे अप्लाई करें इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ CAFB so in case of
considering the whole document as context, अगर ये मेरा D1 है, ये D2 है, और ये D3 है, if I consider the whole document as context, so what would be the score between A and B? The correlation between A and B is one, they co-occur over here, they co-occur over here also, and they co-occur in this case also. So if we consider the whole document as our window, so in that case, the co-occurrence between A and B is 3 out of 3, right? So this is a very strong relationship. But in case we consider just 3 words as the window size, so we have, this is the window of A, this is the window of A, and this is the window of A. So in this case, B is occurring twice within the context of A. So in this case, the contextual relationship between A and B is 2 out of 3 because we define a window size of 3. और ये अगर हम around A 3 size window को देखें, so B is not occurring in this case and B is occurring in the other 2 cases. So in this case, its correlation is 2 out of 3. So it depends कि आप correlation की window जितनी बड़ी होगी उतने correlations का score ज़्यादा आएगा, जितनी window छोटी होगी उतना कम आएगा, लेकिन उससे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा because once you have decided a window size, that is going to remain the same for all words. तो अगर A और B का score कम आ रहा है just because you have given the window size equal to 3, so B और C का भी कम आएगा, F और B का भी कम आएगा, so सारे scores आपके कम आएंगे, and basically we look at them in relation to one another. This is, the scores are relative, so इस वजह से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, then we have कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां पे रोक सकते हैं. हेलो. नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. अच्छा. So, and the other type of relationship is paradigmatic relationship, in which case the 2 words may be synonyms for one another. So, for example, the words cat and dog may have a paradigmatic relationship. Why? Because cat and dog may never coexist in a in a contextual relationship, but they may have a common context. So if that is the case, we consider those words having a paradigmatic association. ये ऐसा है कि let's say A, B, C, A, B, C, E, F, Z, B, C, Z, B, C. So in this case, although A and Z are never occurring together, आप अगर देखें relationship between A and Z, the syntagmatic relationship, it's going to be 0 because A के context में कभी भी Z नहीं आया और Z के context में कभी भी A नहीं आया. So they never coexisted in each other's context. But there is another kind of relationship between A and Z, and that is having a substantial overlap in their context. तो आप देखें कि this is part of the context of A. ये भी A के context का part है. और ये जो है ये Z के context का part है और ये भी Z के context का part है, including these also. So it means कि although A and Z are not occurring together, but they do pretty much the same things and therefore their context is very much similar. So अगर हमें यहाँ पे let's say कोई identify करना है कि A का जो context है उसके अंदर ये सारे words हैं and B का जो context है उसके अंदर Z का जो context है उसके अंदर ये words frequently occur कर रहे हैं. So if there is enough overlap between these two, we can say that A and Z are paradigmatically associated with one another. इस तरह की relationship की और example क्या हो सकती है? Wednesday and maybe Thursday. आप देखें कि किसी भी sentence में दोनों एक साथ नहीं use हो रहे होंगे. For a task, they may either say that it's going to be performed on Wednesday or Thursday or any other day for that matter. लेकिन
उसके अराउंड जो दूसरे टास्क जिनकी बात हो रही है, that may be common. So it means that these words are having paradigmatic association with one another. Paradigmatic means that they are replacements for one another. They are um, they are having a relationship in which one word may be used instead of another. So इस वजह से दोनों coexist नहीं करते, because वो almost एक तरह की meaning या एक तरह की जो है एक activity को represent कर रहे होते हैं. So that's why they would never coexist with each other, but they are rather used as a replacement for one another. ठीक है जी? अच्छा. Uh, so today we would be particularly interested in finding paradigmatic word associations. Okay? For both finding both type of associations, we can make use of some approaches that would help us identify these relationships between words. As we said, they are based on context, and therefore we can apply some statistical measures to identify them. So today we would be particularly looking into finding the paradigmatic word associations. Uh, if we having information about such associations is helpful in different applications. For example, POS tagging, entity recognition, grammar, and many other things, including information retrieval. So these may be the different applications for which these associations can be helpful. So the first thing is how we are going to define context, right? So to define context, there may be two different approaches. Either we may have uh, an easier approach, an approach that is easier to implement. In that case, we may have a general context. That is a general window for context. And we may also have the left, right, and general context. So of course, the second one is computationally more expensive, and it's also going to give you more information as compared to the first one. So it's up to you, okay, according to the need of the application, आप कौन सी approaches में use करते हैं. The working is very much the same. The only difference is the first one is simpler, more straightforward, and is computationally inexpensive. But of course, it's going to give you less information as compared to the second one. So, for example, if I have like let's say a few documents, D1 is, so just assume that these ABC are basically different words that we have in this document. And then this is document 2, document 3. So in case if we go with this approach, the general context. So in that case, in case of the general context, let's say if I have a window of 3, and I'm interested in finding the relationship between words
A and B if there is enough overlap in their context. So A has a context of B and C. Over here, A has a context of D and E. And over here, A has a context of G and F, right? So, sorry, context of if we have a window size of 2. And for B, I have a context of, let's say, this AB. So अच्छा, this window size is actually not 2, it's 3, लेकिन हम उसमें A को ignore कर रहे थे, which where A was also part of the window. Let me just do that again. So the window size is 3, and we have A, B, C, D, A, B, G, F, A, C, B. Right? The window size is 3. So for A, it's this window, then for A, it's this one. This is the third one for A. So A has got a context in which we have the words B. Let's say we are keeping it as a set. हम उसमें इसमें interested नहीं है कि कितनी बार वो words repeat हो रहे हैं. We just want to have a list of all the words that are frequently occurring in the context of A. Sorry, occurring in the context of A, हम उसकी frequency में interested नहीं है. So A के context में B occur हुआ है, C occur हुआ है. Again, B is repeated, so we may ignore that, and then we have G, and then we have C and B, we already have them. So this is the context of A. And let's say if you want to compare it with the context of B, so B has got a context of A and C, B has got a context of A and G, and B has got a context of C and 3. So the context of B is A, C, then we have A repeated, then G, then C again, we have it on the list, and this 3. So this is the context of B. So we have got the different words that are occurring in the context of A and B, and now we can apply some similarity-based measure between the contexts of A and B, and that is going to help us to identify if these two words are having paradigmatic associations. So the words occurring in the context of one another is going to help towards syntagmatic association, and the words having overlapping context is basically going to help us identify paradigmatic associations. Okay, and in case we want to use this second approach, which is the right window, the left window, and the general context, so in that case, basically the main approach is going to be the same, but we are maintaining 3 different sets in that case. So A, L is going to be one set that is maintaining all the words that are occurring to the left of A. Then A right would be another set that consists of words that are occurring in the right of A. And then we may have a general A, which is having all the words that are occurring in the particular window size around A. So again, let's say if we define the left window and right window size equal to 1. So
words that are occurring just one step before A is going to fall into the left of A. तो यहाँ पे आप देखें A is the first characters or word, so there is nothing before A. So and is the case with all the three documents. So this set is going to remain empty because in all the documents there is nothing to the left of A. To the right, as we said, again, we have the window size of 1. So we would just consider one word. So B, B, and C. So to the right, in the right context of A, we have B and C. And in the general context of A, we have B, C, and G. So this is the general context. The left context is empty, and this is the right context. We can do the same for, let's say, uh, let's say F, maybe. So for F, let's start with F, the left context of F. So F is just occurring once in the data set, and when it occurred to its left, it has got this G. So in its left context, we would just have G. In the right of F, we have an empty set because it occurred once and there is nothing to its right. And the general context of F is, if we consider the window side of 3, so it's going to be B and G. So now instead of finding the relationship between just this one window, we have to find three relationships. The relationship between these two sets, the relationship or similarity between these two sets, and the similarity between these two sets. We would add them up together, and that is going to give us the collective similarity between these two words. Ji, is it making sense? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। वो अपना बोर्ड दिखाएं आप जरा। अच्छा सर इसमें जो आपने D3 में C, B और 3 को एनसर्कल किया है, आप A, C, B भी तो कर सकते थे। मतलब अपनी मर्जी होती है जनरल कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, ये आप बी के लिए कह रहे हैं ना? जी सर। बी के लिए हमने डिसाइड किया था विंडो साइज ऑफ 3। जी सर। ठीक है, तो 3 का मतलब ये है कि बी के करीब जो 3 वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग बी। तो अगर सर आप A, देखें C, सो B हो सकता हाँ? था। A, C, B भी तो हो सकता था, फिर उसमें B भी आ जाता D3 में। D3 में हाँ, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब आपने विंडो साइज 3 रखी है तो हम दोनों साइड्स पे देखेंगे द क्लोजेस्ट वर्ड्स दैट आर क्लोजेस्ट टू बी। तो अगर आप देखें तो इंक्लूडिंग बी, बी के करीब तर वर्ड्स कौन से हैं? 3 और C। 3 और C। अगर हमारी विंडो साइज 4 होती फिर उसके अंदर A आता। ठीक है सर। ठीक है, अब आप देखें हम इनके लिए ए के करीब तरीन कौन से हैं? बी और सी, क्योंकि इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है। तो उस केस में हम बी और सी दोनों कंसिडर कर रहे थे। अगर हमारे पास साइज 3 है और हमने दोनों साइड्स पे वर्ड्स हैं, तो फिर हम इसके और इससे आगे नहीं जा सकते बिकॉज उससे हमारा 3 साइज पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, ये एग्जाम्पल थोड़ी सी इतनी मीनिंगफुल नहीं थी। जनरली पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप की जैसे मैंने आपको ऊपर बात की कि वो तब ज्यादा सेंस बनाती है जब हमारे पास यहाँ पे लेट से ए बी सी डी, D2 जो है दैट इज ए बी सी डी ई, D3 इज G B C D, and D4 is G B C D E। ये यहाँ पे अगर आप देखें सो हम ज्यादा ये सेंस बनाती है ये एग्जांपल के A and G are having contextual paradigmatic association। ये कभी भी एक साथ एक दूसरे के साथ को अकर नहीं किया इन्होंने, but there is a very high overlap in the context of these two words। Okay, we can say they are having paradigmatic associations। ठीक है, there is a general um, like you can think of them as interchangeable paradigmatic and syntagmatic word associations। For example, um,
For example, words that are having paradigmatic associations are also going to be there in syntagmatic associations. यानी आप देखें कि अगर A और G जो है, if they are having paradigmatic association, in other words, अगर इनकी जो relevance है, if that is above a given threshold, so A और G अगर हमारे पास paradigmatic associations बनाते हैं, so you would more often see कि A और G जो है आपस में नहीं, लेकिन ये syntagmatic rules या syntagmatic associations का भी हिस्सा होंगे, because that means कि इनका context अगर इतना overlap कर रहा है, so that may also go beyond the given threshold. What I'm saying is, अगर हमारे पास paradigmatic association है between words A and G, so more often you would see कि A और G syntagmatic rules का भी part बनेंगे, इनके syntagmatic associations भी strong होंगे. For example, you will have syntagmatic association between A and B, between A and G, between not A and G, between A and C, between G and B. So ये सारे syntagmatic associations भी इनके होंगे, because क्योंकि अगर इनके context में इतना overlap है, so that means कि A का context काफी fixed है और काफी strongly repeat हो रहा है. इस चीज की समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है. अच्छा. So now we come to अच्छा, हमार ऑप्शनल विंडो कोई है जो हर सिचुएशन पे चले या हर सिचुएशन का अपना अपना? अच्छा, ये ऐसा है अमार के एज बी सेड, आपकी बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका ये बेसिकली एक तरह से ये कि आप कितना एरर या कितना एक्यूरेसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं. आप जितना थ्रेशोल्ड को हाई रखेंगे, जितने विंडो साइज को कम रखेंगे, उतने आपके पास कम रिलेशनशिप्स बनेंगे, दोनों पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक. अगर आपने इनकी विंडो की साइज को कम रखा है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब विंडो कम आएगा तो आपके पास कम वर्ड्स को आकर कर रहे होंगे, ये जो सेट्स हमने बनाए इनके अंदर कम वर्ड्स होंगे. तो उसके ऊपर अगर कोई वर्ड्स रिलेशनशिप इस तरह की बनाता है, सो यू विल हैव स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, राइट? सो having smaller window would basically enforce fewer relationships but stronger relationships. अगर आप विंडो साइज को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. ऐसे वर्ड्स जो शायद इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इतने एसोसिएटेड ना हो बड़ी विंडो के अंदर, वो भी आ जाएंगे. अब आपके पास एसोसिएशन ज्यादा बनेंगी, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो रेलेवेंस है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी. सो इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आप दोनों में से किस अप्रोच के साथ जाते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेटा दैट यू हैव, और जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो बेसिकली इफ यू कैन अफोर्ड टू हैव फ्यू मिस्टेक्स, जिसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, कि वो वर्ड्स आपस में बेसिकली रिलेशनशिप नहीं बना रहे थे, लेकिन आपने विंडो साइज इतनी बड़ी रखी है कि वो आ गए, और आप उसके बाद कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म के साथ उसको निकाल सकते हैं, सो आप बड़ी विंडो के साथ जा सकते हैं. अदरवाइज अगर आप विंडो साइज कम रखते हैं, सो दैट मीन्स कि बहुत सारे वर्ड जो शायद रिलेशनशिप बना सकते थे, बट यू डिफाइंड अ वेरी स्मॉल विंडो साइज, उसकी वजह से वो इन रिलेशनशिप्स में हिस्सा नहीं बने. सो दे वुड बी द केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव. सो आपका जो ट्रेड ऑफ है, आप डिफरेंट साइजेस वो ट्राई कर सकते हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग रीजनेबल नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, दैट मींस के आपका काम सही जा रहा है. बेसिकली हम ये भी नहीं कर सकते कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तभी किसी वर्ड को पैराडिग्मेटिक कहेंगे जब उसका कॉन्टेक्स्ट 100% ओवरलैप करेगा. तो टेक्निकली तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, बस उससे डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपके पास पूरे डेटा सेट के अंदर अगर 2-3 रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, सो ऑल्दो यू आर लर्निंग, बट दैट लर्निंग इज ऑलमोस्ट यूजलेस. आप इतने कम रूल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इतने कम एसोसिएशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा. और दूसरी तरफ अगर आपके एसोसिएशन जो हैं वो हंड्रेड्स में हैं, लेकिन उसके अंदर नॉइज है, सो दैट वुड आल्सो बी इनअप्रोप्रिएट. सो देयरफॉर यू नीड टू ट्राई डिफरेंट वैल्यूज फॉर एनी गिवन डेटा सेट, और उससे आपको ये रिलेशनशिप जो है, एक विंडो की अच्छी साइज जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो सकती है. अच्छा, सो जैसे हमने बात की कि
आप दोनों में से किसी भी अप्रोच के साथ यहाँ पे जा सकते हैं. Either you may go with the general window size or you may apply the same thing by having 3 different windows, that is left window, right window and general window. और फिर आप वो ऑपरेशन तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे and you would add up the score that you have got for each of the window. अब सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई कैसे होगी? जैसे हमने बात की, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं. वी हैव रिप्रेजेंटेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सेट. अब हमने पता लगाना है कि उनके बीच में सिमिलैरिटी कैसे यूज हो सकती है. देयर आर डिफरेंट मेजर्स फॉर दैट. फॉर एग्जांपल वी कैन यूज जैकार्ड्स इंडेक्स, and according to Jacquard's index, the similarity between the words W1 and W2 is equal to the number of the context of W1 intersection with the context of W2. What is the overlap in the context of these two words? Divided by the context of W1 union the context of W2. तो basically denominator जो है वो normalize करने के लिए है कि जितने words यहाँ पे इन sets के अंदर ज्यादा होंगे उतना आपके पास overlap ज्यादा आएगा. So अगर आप वो window size को देखें तो वो चीज यहाँ से भी किसी हद तक normalize हो रही है कि जितना आप window size बड़ा रखेंगे उतने आपके पास words ज्यादा आएंगे. ऊपर तो ज्यादा मैच करेंगे लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में भी आपके पास साइज जो है वो बड़ा आएगा and therefore the score is going to be somewhat normalized. अच्छा, अब अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पे, ये जो हमने विंडोज निकाले हैं यहाँ पे फॉर द वर्ड्स अच्छा फॉर द वर्ड्स ए एंड एफ. सो लेट्स से अगर हम सिर्फ जनरल कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं, सो इन दैट केस जनरल कॉन्टेक्स्ट के सिनारियो में हमारे पास ये वाला सिर्फ ये विंडो हम कंसिडर करेंगे. So in case of general context, the similarity between A and F is the union between the two sets. So it's going to be, sorry, in the numerator we have the intersection. So B is common and G is common. So we have two items common और हमने उसका count लेना है. So we have 2. And in total we have B, C and G. So we have 3 words as the combined context of A and F, out of which 2 are similar. So we can say that their context, that their paradigmatic association score is 0.66. ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि intersection of the two contexts और फिर हम यहाँ पे उसका count ले रहे हैं, the number of words that we have in this intersection divided by the number of words that we have in their union. So अगर हम general window लें, so that's how the score can be calculated. अगर हम ये जो हमने ऊपर बात की कि अगर हम ये तीनों windows consider करें, let's say we want to use the left, right and general context all together. So in that case इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ JG, which is like using just the general context, or the Jacquard's index or similarity between A and F using all the 3 windows is going to be, इन दोनों के बीच में similarity जो है, that is at numerator you have 0 क्योंकि हमारे पास कोई common वो नहीं है word, and at denominator we have 1. So this is basically the left context, plus the right context has B and this other word, whatever it is, लेकिन यहाँ पे null set है, so the intersection again is going to be 0, and at the denominator we have 2. So we have 2 B and C over here as the right context of A, and there is nothing to the right of F, so there is no overlap, intersection में कोई item नहीं आया, and this is the score. And for the general context, as we have already identified, it's going to be
2 by 3. So both the scores in this case are going to be identical, that is 0.66. So इस तरह से हम we have identified the paradigmatic association between the words A and F. हमने दोनों तरह से देखा है, आप दोनों में से कोई एक अप्रोच यूज करेंगे, या जनरल विंडो या ऑल द थ्री विंडोज, और ये आपको इस तरह का स्कोर दे देंगे। इन केस ये स्कोर जो है जैकार्ड्स इंडेक्स का, इट विल बी बिटवीन 0 and 1। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई वर्ड ओवरलैप नहीं कर रहा, इट विल गिव यू अ स्कोर ऑफ 0, और अगर सारे वर्ड्स मैच कर रहे हैं, सो इन दैट केस इट्स गोइंग टू गिव यू द स्कोर ऑफ 1। यानी अगर डिनोमिनेटर में 3 वर्ड्स हैं, is the union of two sets, and all the three words are occurring in the context of both the words A and F, तो ऊपर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। In that case we are going to get the maximum score of 1। तो जब स्कोर 0 और 1 के बीच में है, so it means के अगर हमने इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, we can call it the Jacquard's distance between A and F। So all that we have to do is just to subtract the Jacquard's index or similarity from 1, and that is going to give us the Jacquard's distance between any two words। So इस तरह से हम ये identify कर सकते हैं is the distance between, although distance हमें फिलहाल तो नहीं चाहिए, but in case if you need distance between two words, so हम इस तरह से भी उसको identify कर सकते हैं। The main thing that we need at this stage is to have the Jacquard's similarity, जो हमें paradigmatic associations identify करने में help करेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मिसलीडिंग होंगे, ठीक है। आप ये देखें कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो शायद जस्ट बेस्ड ऑन कोइंसिडेंस कुछ जगहों पे ज्यादा को अकर करें, और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स काफी रिलेटेड हों, लेकिन जस्ट बाय कोइंसिडेंस वो कोएग्जिस्ट ना करें। हमारे पास वोकैबुलरी में बहुत वास्ट चॉइस है। सो हम जब देखते हैं कि अच्छा इतनी शॉर्ट विंडो के अंदर वर्ड्स ऑकर हो रहे हैं कि नहीं, सो जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स जो ज्यादा रिलेटेड हों वो बार बार ऑकर करें, क्योंकि आप अगर एक से ना एक उसके अंदर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ये स्कोर कम हो जाएंगे। जनरली हम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दोज वर्ड्स हम उनके सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं। सो दे मे बी मिसलीडिंग, व्हिच मींस के आपके पास शायद बहुत सारे, जो जैसे मैंने आपको अभी बात की कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का सिनेरियो आ सकता है, कि बहुत सारे वर्ड्स जो शायद आपस में रिलेटेड ना हो, वो भी जस्ट बेस्ड ऑन कोइंसिडेंस जो है वो रिलेशंस के तौर पे आ जाए, और बहुत सारे वर्ड जो आपस में रिलेटेड होंगे लेकिन शायद वो इतने क्लोज कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइन नहीं हुए, और इस वजह से वो एक साथ नहीं आए। फॉर एग्जांपल अगर मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग की हम बात करें, तो अगर बाय चांस ऐसा हुआ है कि यूजर ने जिस पैराग्राफ के अंदर मशीन लर्निंग की बात की है उसके अंदर डेटा माइनिंग की नहीं की, और जिस पैराग्राफ के अंदर डेटा माइनिंग की है उसमें मशीन लर्निंग की बात नहीं की, and your window size is one paragraph, so in that case they are not going to be to have syntagmatic association, they may have paradigmatic association। अगर आपने limited vocabulary use किया तो आपके words around machine learning और around data mining match करेंगे, in that case paradigmatic association इनकी बन सकती है, but syntagmatic ये नहीं बनाएंगे। और अगर आप अपने words को बार बार change कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट अपना ऐसा लिखा है कि उसके अंदर repetition कम है, so you may miss the even the paradigmatic association between these two words। So yes, that is misleading, which means that these techniques are not 100% accurate, but we need to have some mechanism from where we can actually get going, and then we can identify कि अच्छा ये approach जो है, although it's not 100%, and for that we may couple it with additional mechanism, जैसे मैंने आपको बात की कि for false positive आप कोई filtering approach लगा सकते हैं, for false negative you may try some other approach that would add more words to the list of words, और इस तरह से आप इनको और टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके अपनी जो अप्रोच है उसको ज्यादा रोबस्ट बना सकते हैं। लेकिन दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, और आप सिर्फ एक दो फार्मूलों को इंप्लीमेंट करके यू कैन आइडेंटिफाई 50, 60, 70% ऑफ सच एसोसिएशंस। ठीक है।
स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस कोई भी 100%, इनफैक्ट कोई भी अप्रोच 100% सच नहीं होगी जो हर डेटा सेट के ऊपर 100% काम करे, बट स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस के अंदर ऐसे इश्यूज ज्यादा होते हैं क्योंकि वो वर्ड्स की मीनिंग्स को तो समझने की कोशिश ही नहीं करता, वो तो जस्ट नंबर्स के ऊपर जाता है. सो these approaches can be easily fooled, but why we choose them? Because they are very easy to implement and you can straight away start getting results if you have sufficient data. अगर डेटा काफी ज्यादा है, so we believe that there is going to be enough overlap. Still its performance is not going to be 100%, but जितना डेटा ज्यादा होगा उतना ये काफी हद तक स्टेबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा. अच्छा, there is another approach that we can use for finding the distance or the similarity between the context of two words, and that is to use a uh, a document representation scheme, just like we did for machine learning approaches. जिस तरह से हम clustering classification वगैरह से पहले words को vectorize करते थे in order to represent them as fixed length vectors of numbers, और फिर हम उस पे कोई machine learning approach लगा देते. So the same we can do for finding such associations. So that is another way of looking at it. So for example, if I have uh, let's say the documents are D1 is A, B, C, and D. D2 is A, B, C, and E. D3 is Z, B, G, E. And D4 is Z, B, C, D. So if I have these four documents and I want to have the context, I want to measure the context overlap of A and Z in order to find out कि इनके बीच में paradigmatic association है कि नहीं. So first I need to represent the context of A and the context of Z in the form of some numeric vectors. So जैसे हम TF-IDF frequency based इस तरह की approach लगाते थे, we need to present them as vectors, and once we do that, now we can apply any kind of similarity measure on it that we can use for vectors. So let's say यहाँ पे मैं कहता हूँ कि the context of A is, so these would be, let's say, B, C, D, E. ये मेरे पास यही set of words हैं. So आप देखें कि A के context में B कितनी बार occur हुआ है. Again, if we think of the context window is 3, so the window size is 3. So यहाँ पे A के context में B आया है, यहाँ पे A के context में B आया है, यहाँ पे A है ही नहीं, यहाँ पे भी A नहीं है. So A के context में B 2 दफा आया है, C जो है वो भी 2 दफा आया है, D नहीं आया और E भी नहीं आया. And the context of Z is this. उसमें B जो है वो 2 दफा आया, G, अच्छा, we have a G also. G जो है वो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे G का स्कोर है 1, और C जो है वो भी एक दफा occur हुआ, and D and E are not in the context of Z also. So now we have represented them in the form of vectors, और अब हम vectors के ऊपर जो भी operations हमारे पास available है वो काम हम इनके साथ कर सकते हैं. For example, we can apply some similarity measure, for example, a dot product. So in that case, the similarity between A, context of A and context of Z is going to be xi dot yi. ये में x, और ये हमारा, हम एक इसको x कह देते हैं और इसको y कह देते हैं, ठीक है. और I जो है, that is basically these features that we have as columns divided by अच्छा. So we can this could be the formula, और हम okay, so we have nothing in denominators, हम just इसका dot product इस तरह से ले सकते हैं. So sorry, and we have to sum it up for I equal to 1 to n. So n is the number of features
and x and y are the two vectors that we are comparing. So 2 into 2 is going to give us a 4 plus 2 into 1 is going to give us a 2 plus 0 plus 0 plus 0. So the similarity between these two is 6. इस तरह से हम सारे words के साथ context निकाल सकते हैं, and then we can apply some threshold, और जो scores threshold से ऊपर आएंगे we are going to preserve those as having acceptable similarity, और बाकियों को हम discard कर देंगे. हम इस तरह से let's say cosine similarity भी use कर सकते हैं. I do not remember the exact formula, but it's something like let me just have a look. Instead of writing the wrong formula, देख लेते हैं. Cosine similarity. So this is the formula for cosine similarity. We have the product of A into B, just like we did in the numerator, and in the denominator is divided by the squares of sum of squares of square root of both the vectors. So it's in numerator is the same as we did in the case of dot product, and it's divided by the sum of, again, I is from 1 to n, xi square under the root multiplied by a sum of I is from 1 to n yi square under the root. So in numerator we are going to get the score of 6 as we just calculated, and in denominator we have square of all values of x, sum of it basically. So it's going to be square of 2 plus square of 2 plus square of 0 plus square of 0 plus square of 0. So that is going to give us 4 plus 4 is 8 under the root into 2 plus 1 plus 1. So that is basically 4 under the root. So whatever the value that we get from here is going to be the cosine similarity score between these two contexts. और इस तरह से हम सारे words के लिए use कर सकते हैं. हमारे पास सारे words की सारे associations का एक range आ जाएगा, and then we can apply some threshold कि अब हमने कौन सी associations रखनी है, कौन सी नहीं रखनी. जितना आपका threshold ऊपर होगा उतने आपके पास कम associations आएंगे और अच्छी quality के आएंगे. जितना threshold नीचे होगा उतनी associations ज्यादा होंगी और उसके अंदर noise associations या जो है inappropriate जो है वो चीजें भी आएंगी, which may not sound like good associations. So having a threshold is another thing जो आपको according to the data set apply करना चाहिए. आप कोई भी distance measure लगा सकते हैं. For example, we have different measures like Manhattan distance, Euclidean. So आप कोई भी इस तरह का डिस्टेंस मेजर लगा सकते हैं, बस सिर्फ ख्याल ये करना है कि उस केस में आपने छोटी वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है. सो या उसको ज्यादा जो है एसोसिएशन कंसीडर करना है. सो इफ वी हैव द मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन C of A and C of Z, so in that case we have two minus two plus 2 minus 1 plus 0 minus 0 plus 0 minus 0 plus 0 minus 1. So we have 2 plus 1 plus 1, which gives us a score of 4. So 4 is the distance between CA and C2. So अब distance जितना कम होगा उतनी similarity ज़्यादा होगी. So if you are using the distance measure, we are going to prefer smaller values because the inverse of distance is similarity. So that's how we can identify paradigmatic word associations, and in the next lecture we are going to look into finding syntagmatic associations between words. कोई questions हैं तो बताएं.
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छी बात है ये? नहीं, सिमिलैरिटी, अगर आप सिमिलैरिटी मेजर यूज करें तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस में कोई फॉर्मूला यूज करें तो फिर वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है सर। हमने पहली दो जो फॉर्मूले देखे, डॉट प्रोडक्ट और कोसाइन सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी बेस्ड फॉर्मूले थे, उसमें स्कोर ज्यादा आना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस बेस्ड लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूक्लिडियन और मैनहट्टन या कोई और डिस्टेंस मेजर, तो उसमें वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा। ठीक है सर। ये बेसिकली थ्रेशोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मूले पे आपने थ्रेशोल्ड का एक साइड रखना है। फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी पे अगर आपने थ्रेशोल्ड लगा दिया, सो ऑल द वर्ड एसोसिएशन दैट आर अबव दैट थ्रेशोल्ड, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ वो रखेंगे। और अगर आप जो है डिस्टेंस मेजर यूज करें, सो इन दैट केस जितना थ्रेशोल्ड से कम स्कोर होंगे आप सिर्फ वो यूज करेंगे। अच्छा मोमिना, यूक्लिडियन के बारे में कुछ पूछना है या ये अप्लाई कर दें? नहीं सर, वो अमार के क्वेश्चन का रिप्लाई किया। अच्छा अच्छा, ये हमने मैनहट्टन अप्लाई किया है, आप यूक्लिडियन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यूक्लिडियन यूज करना है, सो इन दैट केस द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉन्टेक्स्ट वुड बी बेसिकली इनका स्क्वायर होगा। सो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। सो इट्स 1 स्क्वायर वंस। अच्छा यहाँ पे भी आई थिंक हमने गलती की है। द स्कोर इज 2 माइनस 2 इज 0, 1 1 स्कोर हमारे पास यहाँ पे 2 आता है, 4 नहीं आता। ठीक है ना? स्कोर आता है, यहाँ से भी 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से 1, सो द स्कोर इज 2। और यूक्लिडियन के केस में भी यहाँ से 0 आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1। सो दोनों तरह से हमारे पास दोनों इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 ही, सॉरी 2 ही आता है। ठीक है, जी सर। अच्छा और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? जी ओके, सो द क्लोजिंग रिमार्क्स आर कि अगर हम ये वेक्टर वाली अप्रोच यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे देखी है, ये जो हमने पहले वेक्टराइज किया और फिर डिस्टेंस या सिमिलैरिटी का फॉर्मूला उसके ऊपर लगाया, दिस अप्रोच हैज गॉट अ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज के जिसमें ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर ये वर्ड जो है, ये अगर 8 टाइम्स ऑकर कर रहा है, को ऑकर, सो इट्स गोइंग टू बी मोर, इट्स गोइंग टू गिव यू हाई स्कोर ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हम ये वाला सिमिलैरिटी फार्मूला लगा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर बेशक बाकी वर्ड्स को अगर ना करें, लेकिन ये तो स्टॉप वर्ड भी हो सकते हैं कि दोनों के बीच में द जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। सो similarity approach that is based on dot product particularly favors fewer more frequent words over more relatively lower repeating words। ठीक है, अगर आप इस वजह से कोसाइन सिमिलैरिटी इज अ बेटर अप्रोच। कोसाइन सिमिलैरिटी में अगर ये स्कोर कम भी है, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में कोसाइन सिमिलैरिटी का स्कोर आपके पास ज्यादा आएगा। और वही सिनारियो आप अगर ये जैकार्ड इंडेक्स लगा रहे हैं, तो उस केस में भी ये आपके पास सिनारियो होगा और जो ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज है। ठीक है, सो आई जस्ट रिपीट के कोसाइन सिमिलैरिटी या जैकार्ड्स इंडेक्स जो है वो इस चीज को फेवर करता है कि आपके पास ज्यादा वर्ड्स बेशक कम ओवरलैप करे, लेकिन ज्यादा वर्ड्स ओवरलैप करे, तो आपका स्कोर तब ज्यादा आता है। ज्यादा ओवरलैप का मतलब ये कि मेरे पास अगर यहाँ पे फीचर्स या वर्ड्स हैं, वर्ड्स है कॉन्टेक्स्ट में W1 W2 W3 W4 W5, ठीक है, और ये मेरे पास है D1, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए और कॉन्टेक्स्ट ऑफ बी
ठीक है। सो अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1, अगर इस तरह का मेरे पास सिनारियो है तो आप देखें कि ज्यादा वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं ऑल्दो द ओवरलैप इज लो। तो अगर इस केस में कोसाइन सिमिलैरिटी जो है ये आपको हाई स्कोर देगा। तो अगर आपके पास ज्यादा वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं ऑल्दो द ओवरलैप में भी लो, फिर भी कोसाइन सिमिलैरिटी आपको ज्यादा स्कोर देगा बनिस्बत इसके ये जो डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट जो है अगर आपके पास इस तरह का सिनारियो है कि लेट्स से this one is 0 0, this one is 1 1, and then we have a very high overlap for a particular word, and then this one is 1 1 and this one is 0 5. So आप देखेंगे there is a huge overlap for just one word. तो ये जो अप्रोच है ये फ्रीक्वेंसी को ज्यादा फेवर करती है, ये बाकी चीजों को इग्नोर करके आपको इस पास स्कोर काफी बड़ा आ जाएगा बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप इन जस्ट दिस वन वर्ड। हालांकि ये ज्यादातर चांसेस हैं कि ये ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड ना हो, ये कोई स्टॉप वर्ड हो सकता है जो शायद प्री प्रोसेसिंग में आपसे रह गया हो। सो इस वजह से मैनहैटन ये जो जैकार्ड्स इंडेक्स है या कोसाइन सिमिलैरिटी है, ये अप्रोच ज्यादा फेवरेबल है बनिस्बत डॉट प्रोडक्ट के या डिस्टेंस बेस्ड मेजर्ड के, बिकॉज वो बड़ी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और यहाँ पे हमें चाहिए ये कि ओवरलैप अगर है तो वो इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ये कि ओवरलैप कितना ज्यादा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमें चाहिए कि अक्रॉस द वर्ड्स ओवरलैप कितना ज्यादा है रादर देन द नंबर। ठीक है, सो ये इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी डिफरेंस है। ये क्लियर हो गया सबको? Okay जी, so that this is the end of today's lecture. मुजाहिर आप हमें तो आप मुझे अटेंडेंस भेज देंगे? सही है सर। ठीक है, मुझे आज की अटेंडेंस भेज दें एंड दिस इज इट। ये मैं अपलोड कर दूंगा स्लिप, सॉरी यूट्यूब पे।